Switch off that light. लाइट वो भी कर दो ऑफ. अरे भाई लाइट ऑफ कर दो भाई प्रभु. लाइट ऑफ. ओके. ओके. गुड मॉर्निंग एवरीवन. Okay, myself, CA Rohit Grover. I'm a qualified chartered accountant, and I'm going to be your faculty for auditing and ethics subject, right? So actually, I teach both law auditing at CA intermediate level, and final maybe I teach auditing for the CMA inter also law and auditing, and for CMA final as well as auditing. So this is the brief introduction of mine. I qualified in the year 2013, right? So it's been 10 years that I am into practice as well as into the teaching profession. Crossed more than 42,000 students so far in a span of 10 years. So I keep on traveling from one place to another place to take the classes. So fortunately, I got the privilege to teach you guys for an auditing subject, right? So as you all know that you are sitting in the new syllabus, right? So you are going to write it for the first time. So I think I have seen some faces. Anybody who has already been through my classes? Where, sir? Okay, okay. Okay, anyways, no issues whether you are a new student or old student. Anyways, everything is going to be new for you. Okay, so this was my brief introduction, and then today we'll keep it little bit light, being the very first day of your subject. I know that you're going through a lot, right? Morning to evening now, completely packed from morning 8 to evening 7:30. So first of all, the congratulations on your death. Okay. So I'll be taking care of your subject. As you can see, the name of the subject, everyone. What is the name? Auditing and ethics. So today we'll only be having the knowledge about the subject, what you need to do, what inputs you need to put in this subject, and how you're going to come out of this subject, right? So I'll bring you the linkages also of this subject with the CA final, so that you will come to know that what kind of discipline and what kind of things you need to incorporate in CA inter, so that you will not find it difficult when you are entering into what? CA final, right? Then after clearing CA, I qualified my CS also. I'm a CMA qualified also. I did my LLB. I did my LLM. I'm a DISA qualified. I'm a BCom honors from SRCC Delhi University, Shriram College Commerce. And after that, recently I did my MBA from Christ University. And now, when you will be writing your May examinations, I'll be writing in June my insolvency professional examinations. So I'll be a. Have you heard of subject called liquidation? So from the May 2000, maybe from the June 2024 onwards, I'll be a official liquidator registered with the central government. So I'll be liquidating the companies. I will create the death for the companies. You must have read the incorporation, right? INC form numbers, everything, Spice Plus, all those things. So I am opposite to that. I'll be liquidating the companies. I'll be winding up the companies, right? But for that, you need to do one course called Insolvency Profession. For that, you need to be 10 years in practice. How many years? 10 years. So that's why I am writing, because it's been 10 years that I am into practice. So I'll be eligible to write my examination. So this is what the brief profile I'm carrying on my shoulders, and I'll be delivering you the subject called auditing and ethics. Now, first of all, let us understand what are the changes you got in this particular syllabus and what is actually your syllabus. All those things one by one will go. Today we'll keep it very light. We are not going to understand anything. Today, only the basic things I will tell you what you need to incorporate in this subject. Now, before starting the subject, I need all of you to answer me the difference between a CA and a chartered accountant. Like, what is the difference between these two persons? I know that my handwriting is too bad, but you have to manage with that. Okay. Keeping the things aside, first tell me the difference between being a CA and being a chartered accountant. Or I should ask like this, how many of you want to become a CA and how many of you want to become a chartered accountant?
तो आपके मन में पता क्या आ रहा होगा कि सुबह सुबह सस्ते नशे करके आए हैं, करेक्ट? इन योर माइंड, इन योर माइंड इट विल बी लाइक सुबह सुबह ऐसा नहीं है. It's just that कि you are unaware of some of the things which you need to know. That's why we started like this. क्योंकि if you want to enter into a subject of auditing, you have to understand one thing very clearly कि I will not make you learn auditing, I will make you consume auditing. Are you getting the point? Reason being very simple. This is the only subject which is going to help you out in post qualification. Either you are in job or you are in practice, right? I will try to connect everything intact, but first you tell me the difference between being a CA and being a chartered accountant. Anybody is aware or not aware? Not aware. So let me tell you what is the major difference between these two. Why these two people are different. See, once we qualify our CA final K papers, right? After that, you have two options in the market. One is either you can go into service, means employment, or you can come into what? Practice. Practice means what? Either you go in service or you go in practice. In both the cases, you have to obtain one membership number. What is the number? Membership number which ICA allots you. Like my membership number is 232859. And I also tell you that how you can cross verify someone's membership so that you can come to know whether that person is a member of ICA or not, right? I will tell you some places also. So 2328 is my membership number. So it means I was the 2,32,859th chartered accountant of India, right? Right now, 3,50,000 wala series is going on. So it means in India, total how many chartered accountants we have? Almost 3,50,000 to 3,30,000. ये range है. Because some of the chartered accountants who qualified in 60 or 70s, their Atma has already met with Paramatma. Am I correct or not? उनका तो ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है ऊपर. तो एवरेज लगा के चले 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे. तो ऑब्वियसली 3 lakhs to 3,20,000 CAs will be there, right? Now try to understand the whole conversation. Now 3,20,000 chartered accountants are there in India, out of which only 80% goes towards employment. They choose what? Employment. अब जब आप employment करते हो, when you get qualified, you will have the campus placement, right? I say आपको campus placement देता है, or you can also choose an job on your own, right? So when you go for an employment, you don't have to obtain one certificate called what? COP. What do we call it as? इसे बोलते हैं certificate of practice. What is COP stands for? You don't need this if you are into the employment, but only 20% of the chartered accountants come into what? Practice. So those 20% who comes into practice, they have to definitely obtain membership number plus what? COP, certificate of practice. So certificate of practice and membership number, these are the two separate certificates which will be given to you on your convocation day. Which day? Convocation. So once you will get qualified, once your result will come positive, ICA will invite you to Hyderabad, Chennai, Bangalore, so many metropolitan cities में convocation होता है. एडवोकेट का अपन देखते हैं ना, वो ब्लैक कलर का कोट एंड हैट, हुर्रे ऐसा करके, सेम चीज होती है. कहां पे हो? आईसीए में. तो यू जस्ट इमेजिन कि 3,000 4,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट सिटिंग इन वन ऑडिटोरियम एंड टेकिंग एन ओथ, राइट? हमारी भी एक ओथ होती है, वो हम मूवीज में देखते हैं ना, कोर्ट में मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा. तो अपने भी बहुत हैवी हैवी वर्ड्स है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऐसा करके बहुत हैवी हैवी वर्ड्स है. So those things you have to do. So convocation day पे you will get membership number as well as COP. But who does not need a COP? Those who are going for what? Employment. So it means if you are choosing an employment, you are just a CA. When you can start writing the word called chartered accountant below your name, if you are a COP holder. If you are a what? इसका मतलब those chartered accountants who after getting qualified choose an employment, they are only called CAs. And you are not allowed to use the word chartered accountant below your name. You can only use your work. Like, what is your name, Amma? Rama Devi. So, CA Rama Devi. She cannot write CA Rama Devi in the bracket what? Chartered accountant. Like, my name is CA Rohit Grover, chartered accountant. What does that mean?
कि I am into employment or I am into practice? I am into practice. It means I am holding what? COP, certificate of practice. Once you will get the membership number and once you will get the certificate of practice, आपको हर साल रिन्यू करवाना होता है. क्या करवाना है? रिन्यू. तो 30th September, on or before 30th September every year, you have to pay your membership number, you have to pay for your COP, and that is approximately 6,000 to 7,000 rupees including GST you need to pay, and your membership and COP will get renewed every year. Are you getting the point? So this is that's what when I gave you my introduction, what did I say? I am C. Rohit Grover. I am a qualified chartered accountant. What is the word I used? Qualified chartered accountant. It means I was talking that I am into what? Practice. Those who do not come into practice, they are not allowed to use the word called what? Chartered accountant. Now I hope you understood the difference between these two words, which I was asking you. What are the two words? CA and a chartered accountant. So who is a CA? Who is a member of ICA but not holding a COP? And who is a chartered accountant? Who is a member of ICA but also holding a COP. Acha, why I am giving you the clarity, I will tell you the reason also. Because there used to be one chapter called company audit in our auditing subject. That company audit, and in your law there is one chapter called audit and auditors, right? They both are very similar. Not similar, they both are same. But as it is being introduced in your law, that has been removed from where? Auditing. Because otherwise it was a duplication. So that chapter, me and Prithvi sir will decide who is going to teach you. Maybe I think Prithvi sir only will teach you because now it is a part of what? Law. In case he will allow me, then that chapter I will only teach you. That is called audit and auditors in law. And we used to call it as company audit in audit. वहां पे जाके आपको इसका importance समझ में आएगा, which I am telling you now. So now, whenever someone says that, hi, I am a chartered accountant, what does that mean? He is saying that he is in practice. He is a practicing CA. आप कभी भी आप वो देख लो, आपका वो जो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, नेम प्लेट होती है, you will never find an employed CA using the word chartered accountant. Allowed ही नहीं है. ICA will punish you. There is a concept called professional misconduct. What do we call it as? प्रोफेशनल मिसको आईसे आपको पनिश करता है. आईसे बोलता है अगर आपको वर्ड यूज कर रहे हैं, व्हाट इज अ वर्ड? चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो यू हैव टू बी अ व्हाट होल्डर? सीओपी होल्डर. आपके पास सीओपी होना चाहिए, राइट? आपके पास मेंबरशिप होना चाहिए, आपके पास सीओपी होना चाहिए. फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है. लाइक आई गॉट माई सीओपी इन द मे 2013. दैट्स व्हाई in the May 2023, I'm how many years old in practice? 10 years old. Now I'm eligible to do some things which are, only the experienced practicing CAs can do. Like I told you that I'm applying for a subject called what? IP. IP stands for Insolvency Professional. This is one of the things which you can only do once you have completed your 5 years of what? Practice. अब जब आप practice में आते हो तो आपके सामने ये वर्ड लगता है ACA. ACA stands for Associate Chartered Accountant. What is ACA stands for? And once you complete 5 years of continuous practice, you become FCA, Fellow Chartered Accountant. What do we call you? समझ में आ रहा है? तो what I am right now? Fellow Chartered Accountant. Because I have completed 10 years of practice. अब समझ में आ रहा है? So आप पहले CA बनते हो, फिर आप COP लेते हो तो आप ACA बन जाते हो. ACA बन के you practiced for 5 years, then you can call yourself as what? FCA, Fellow चार्टर्ड अकाउंट. ये जर्नी आपको क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि आफ्टर गेटिंग क्वालिफाइड टुडे द एनवायरनमेंट एंड द वर्ल्ड इज सच दैट योर क्वालिफिकेशन प्लेज ओनली 1% रोल इन योर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. टुडे द होल वर्ल्ड इज बेस्ड अपॉन दिस थिंग. व्हाट डू वी कॉल इट एज? स्किल. आप जितना अपने स्किल्स को अपग्रेड करोगे एंड अपस्किल करोगे, that is how much you can sell yourself in the market. Now अगर मैं तुम्हें आज अपना एक स्टेटमेंट बताता हूं, like say for example I am also associated with Unacademy. मैं Unacademy में भी लेक्चर्स डिलीवर करता हूं, ठीक है? वहां पे पर आवर मेरे को अप्रोक्सीमेटली नहीं तो 10,000 to 13,000 रुपीज पर आवर आपको मिलता है. 1 घंटा पढ़ाने का 13,000 रुपए. तो इसका मतलब अगर मैं वहां पे 2 घंटे पढ़ाता हूं तो मैं दिन में 26,000 रुपीज कमा रहा हूं. करेक्ट है?
अब मेरे को ये बताओ, अ नॉर्मल पर्सन हु इज डिलीवरिंग समवेयर एल्स is getting 1500 or 1000 rupees per hour. How do you get that much over there? That is nothing but called practice, what you are into, plus your upskilling. अब मेरे विजिटिंग कार्ड के अंदर 9 क्वालिफिकेशंस लिख के आती है. हाउ मेनी क्वालिफिकेशंस? 9. तो अदर पर्सन हु इज हायरिंग मी, he knows that कि he is not only hiring a chartered accountant, he is hiring a 9 different qualified skillful persons, but put together in one. That is what the benefit of skilling yourself, right? अब उसके बाद बेनिफिट क्या होता है कि वंस, अभी मैं आपको बताता हूं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होने के बाद क्या होगा, कि उसके बाद जब when the companies will come to me and they will say winding up, I think your liquidation chapter is there in your accounts. One chapter is there, you will understand. I think not yet started. When it will start, you will come to know that कि liquidator helps in realizing the assets of the company. वो कंपनी के एसेट्स को क्या करता है? बेचता है, वहां से पैसा कलेक्ट करता है और लाइबिलिटीज को क्या करता है? पे. लेकिन सबसे पहले वो अपनी सैलरी निकालता है. क्या निकालता है? सैलरी. और एक लिक्विडेशन की सैलरी 40 lakhs to 50 lakhs पर कंपनी होती है. कितनी होती है? और ये 2 months का प्रोसेस होता है. इसका मतलब अगर मेरे को साल में एक क्लाइंट मिलता है तो मैं 50 लाख रुपए कमा रहा हूं. तो अगर मेरे को साल में 5 क्लाइंट भी मिलते हैं, मैं 2.5 CR कमा रहा हूं, which I am not able to earn right now because I am not IP. तो CA is just a first qualification which you need to do. After getting qualified as a chartered accountant, there are so many small courses, post qualification courses available in the market which you have to do. Like what I am doing: insolvency professional, forensic audit, treasury management, registered valuation, surveyor and loss assessment. Like that, hundreds of courses are there, and ICA only provides you the degree. 2 months का कोर्स होता है, ऑनलाइन पेपर यू हैव टू गिव. 10 मिनट्स में रिजल्ट आ जाएगा, हाफ एन आवर में सर्टिफिकेट. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स you can start calling yourself as a CA Rohit Grover Chartered Accountant IP. What is IP? Insolvency. And there are hardly 500 to 600 IPs across India. That makes you more valuable. So CA is just a first stepping stone which you will clear. After getting qualified, don't stop learning. Keep on skilling yourself. upskill करते जाओ, क्योंकि अगर आपको अपने आप को एक महीने में 10 से 12 लाख रुपए कमाने हैं, which right now you are thinking your per month per annum package. तो if you want to convert it into 1 month, that much of income in 1 month, तो you have to upskill after getting qualified. आपको बहुत सारी चीजें और करनी चाहिए. अब जैसे मेरे ऑफिस में अगर कोई क्लाइंट आता है, if any client enters my office, he does not go empty handed. मैं जाने ही नहीं देता. उन्हें बोलता है इनकॉर्पोरेशन करना, आओ. कॉस्ट ऑडिट करना, आओ आओ. स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, आओ आओ आओ. क्योंकि अपन तीनों हैं, सीए, सीएस, सीएमए. सर कंपनी का लिक्विडेशन करना, आओ. और मैंने चार्टेड अकाउंटेंट के साथ एलएलबी भी करी. रीजन बीइंग वेरी सिंपल, ये 2 ऐसे प्रोफेशन है जो आप एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हो. दीज आर द ओनली 2 प्रोफेशंस which you can practice together. You can't practice CA with CS or CMA. If you are holding one COP of ICAI, you are not allowed to hold the COP of CS. You are not allowed to hold the COP of what? CMA. आप एक ही COP ले सकते हो. Even I am triple qualified, I am holding a COP of only ICAI, Chartered Accountants of India. समझ गया? लेकिन LLB and ICAI का एक ट्रीटी है कि these 2 professions can be practice together. It means I am a COP holder of ICAI as well as a COP holder of Bar Council of India. What do we call it as? Bar Council. जैसे अपना मदर बॉडी कौन है? ICAI. वैसे LLB का मदर बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया. उधर से भी परमिशन ले लिया, इधर से भी परमिशन लिया. These 2 practice can be done together. अब सोचो मेरी नेम प्लेट क्या होगी. अगर कोई मर्डर करके आया तो मैं नेम प्लेट को घुमा दूंगा. क्या लिखा होगा? रोहित ग्रोवर, नीचे क्या? LLB, एडवोकेट. और अगर कोई ऑडिट करवा रहा है, मैं फिर घुमा दूंगा. क्या लिखा हुआ है? रोहित ग्रोवर, चार्टेड अकाउंटेंट. आपको क्या चाहिए? आप मर्डर करो, मैं बैठा हूं. आपको ऑडिट चाहिए, मैं बैठा हूं.
आपको शादी करानी है, उसके लिए मैं नहीं बैठा, उसके लिए मैट्रिमोनियल ब्यूरो जाना पड़ेगा आपको। करेक्ट है नहीं है? मैं तो सोच रहा हूं ये भी कर लेते हैं, क्यों किसी को छोड़ना। कोई बोल रहा है सर ऑडिट के साथ वाइफ मिलेगी क्या, या ऑडिट के हस्बैंड मिलेगा, ठीक है भाई अपन रेफर करवा देंगे, ऐसा नहीं। तो आपको क्या करना है, आफ्टर गेटिंग क्वालिफाइड बस शांत नहीं बैठना है। सीए इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। व्हेन डिड आई लर्न दिस, यू नो, हमारे टाइम पे जो हमारे फैकल्टीज होते थे ना, दे वर नॉट ईगर टू स्पेंड और दे वर नॉट ईगर टू स्प्रेड दिस नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। हमें आते थे, पढ़ाते थे, पढ़ा के चले जाते थे, एंड वी वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग लाइक दिस कि वी आर पेइंग यू 6,000, आप आओगे हमें पढ़ाओगे और चले आओगे। लेकिन आज के टाइम पे इफ आई एम नॉट गिविंग यू द नॉलेज along with the subject which I am teaching you, then it is unethical on my part, that why I'm not telling you what is there after that. क्योंकि if I can do this, you all are well eligible to do more than me. Are you getting the point? तुम सोच के देखो, हमें किसी ने एजुकेट नहीं किया था। I started doing all these things since 2014 onwards. 2013 तक I was only doing CA. I was BCom honors from SRCC and only CA. ये बाकी की 7 डिग्रीज आफ्टर दैट क्वालिफिकेशन आई लर्नड कि अगर आपको पैसा कमाना है, इफ आफ्टर एवरी 5 years यू वांट टू ऐड 1 zero इन योर इनकम, देन यू हैव टू डू दिस। और जीरो पीछे ही अच्छी लगती है, सामने नहीं। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, माय फर्स्ट जॉब वाज विद सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई वाज एन असिस्टेंट टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और मेरा 12.75 lakhs का पैकेज था 2013 में। उस टाइम पे मेरा 12 lakhs का पैकेज था। द रीजन बीइंग आई वाज ऑल इंडिया रैंक 19 इन सीए फाइनल। तो मेरे 7 एग्जामिशंस आउट ऑफ 8 पेपर्स थे इन सीए फाइनल। तो उस टाइम पे एसएफएम में मेरे को 93 मार्क्स थे, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, विच इज नाउ डेज कॉल्ड एएफएम, राइट। तो उस टाइम पे सेबी इनकॉर्पोरेटेड मी। आई लेफ्ट द जॉब विद इन 1 year क्योंकि आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आई रियलाइज दैट डे कि आई डोंट वांट टू कॉल समवन अ सर, आई वांट पीपल टू कॉल मी सर। करेक्ट है नहीं है भाई? हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं इतना 5 साल। अब मेरे को ये बताओ, in the last 3 years you might have skipped so many functions during your examination. I'm not saying overall in the through, might have skipped so many functions, might have not done something which you want to do. सबसे बड़ी बात, आप कॉलेज ही नहीं जा रहे हो। ये लाइफ, ये टाइम आपका बेस्ट एंजॉयमेंट का टाइम है। आपको कॉलेज जाना चाहिए, आपको मस्ती करनी चाहिए। मस्ती इन द सेंस, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? आपको मतलब यू हैव टू ग्रो योर सेल्फ, एम आई राइट? लेकिन आप यहां पे बैठे हो, सुबह मॉर्निंग 8 से लेके इवनिंग 7:30 तक, व्हाट यू आर डूइंग, सीइंग द डिफरेंट फेसेस whom you don't like. I know from inside whom you don't like. Morning 8 o'clock ko half of you might be in the sleeping position, especially 30% at the end. Am I correct? अब by the time another class will come, another class, 6-7 classes में, life is very monotonous and that is going to continue for the next 2-3 months as well. Am I correct? It means you are sacrificing your college life, you are sacrificing so many functions, family function, this. And if you are not clearing CA, it means the most and the biggest, dumbest person available on this planet will be you. समझो मेरी बात को। आप इतना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है ना? आपने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, आपने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, ठीक है ना? और उसके बाद आप सीए भी नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट क्लियरिंग सीरियल। आप किस चीज का सेक्रीफाइस कर रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आइदर यू आर सेक्रीफाइसिंग दैट एंड बी सक्सेसफुल हियर, और इफ यू आर अनसक्सेसफुल हियर, बी सक्सेसफुल देयर। करेक्ट है नहीं है? नहीं बताओ अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। करेक्ट बोल रहा हूं ना? आई फुल्ली विद यू, आई एम फुल्ली विद यू। हमारे टाइम पे हमने भी बहुत सेक्रीफाइस करे। तो चार्टेड अकाउंटेंट बनना इज नॉट लाइक अ गॉड गिफ्ट थिंग और समथिंग लाइक दैट। एक एवरेज स्टूडेंट अगर सेल्फ डिसिप्लिन लेके आएगा थोड़ा बहुत, इन द नेक्स्ट 2-3 years, अगर आप अपने आप को डेडिकेटली you will put it into this course, I can guarantee you, sir, those girlfriend and boyfriends which you forgot to make will start following you. तुमसे खुद आके नंबर, are you a CA? Can I be your girlfriend?
और दे विल डू द R&D ऑन यू। आपके ऊपर इतनी स्टॉकिंग होगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग। भाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बच्चे इतना हेलो हेलो सर ये वो बोलते हैं, इतना मस्त फोटोग्राफ डालते हैं, मस्त मोटा कमा रहा होगा। मैं वही बता रहा हूं सर, जो आपने सेक्रीफाइस किया ना, वो सेक्रीफाइस नहीं किया, दैट इज जस्ट पॉज्ड फॉर अ मोमेंट विच यू विल अनपॉज इट आफ्टर द स्पैन ऑफ 5 years। उसमें से 2-2.5 साल आपके ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है ना। अभी और आपका 6-7 months में एग्जाम है, यू विल क्लियर। 2 साल की तपस्या है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकलशिप, एंड आफ्टर दैट आपको फाइनल लिखना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? But let me tell you one thing, next 4 years are going to be highly crucial for you. Reason being very simple. I will tell you, you know, everything practically. What I'm said so far is everything is practical only. I'm not telling a lie to you. Please tell me one thing. मेरे को ये बताओ, ये 5 years का जो आपने पूरा डेडिकेशन दिया है, जस्ट नाउ यू केम आउट फ्रॉम फाउंडेशन, है मैं करेक्ट? तो वी कैनॉट एक्सपेक्ट यू टू बी दैट मच मेच्योर। आप अभी फाउंडेशन से आए हो, एंड राइट नाउ यू आर नॉट अ सीए स्टूडेंट, यू जस्ट बिकेम एलिजिबल टू बी अ सीए स्टूडेंट। आपने सिर्फ फाउंडेशन क्लियर किया है। मेन हार्डवर्क कहां पे आता है? सीए इंटरमीडिएट में एंड सीए फाइनल में। आर्टिकलशिप इज योर गोल्डन पीरियड। Articleship में you will learn everything in a practical manner. Your employer, your chartered accountant will take you to the bank audits, will take you to the company audits, will take you to the tax audits, accounting, IT department, GST office. Everywhere you will go, you will get a practical exposure. That 2 years you are going to build your skill. Or after getting qualified, don't stop. I'm not saying that do CA, CMA just like me, but upskill yourself. Look at the environment, what is required, and according to that, look at the course in the market if available. Do that. क्योंकि if you are not upskilling yourself, you are outdated in the market, and somebody else who got qualified after you will earn more than you, because demand is for which person? Outdated person professional or updated professional? Updated professional. आज मेरे को मालूम है, मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूं, इट्स बिन 11 years आई एम टीचिंग, एंड आई डिड नॉट अलाउ एनीवन टू टेक ओवर माय सब्जेक्ट। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, क्योंकि आई अपडेट माई सेल्फ बिफोर आई से अपडेट्स इट्स मटीरियल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि मैं डायरेक्टली mca.gov.in से अमेंडमेंट्स डाउनलोड करता हूं, पहले मैं उनको रीड करता हूं, स्क्रूटनाइज करता हूं, उसके 6 महीने के बाद, 4 months के बाद आईसीए अपने मटेरियल में डालता है। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक बैच कर चुका हूं। द मटेरियल हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड, बट आई ऑलरेडी डिड 1 बैच। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, यू हैव टू बी 1 step ahead. If you are like this, no one will be able to take over you. People will come, people will go, but no one will be able to take over you if you do not want anybody else to take over. Or hardly 4-5 years I will teach more. 45 is the age of retirement. Today I am 35. 45 तक काम करना है, 45 के बाद जितना पैसा कमाया उसको खर्च करना है। क्या करना है? खर्च करना है, स्पेंड करना है। वो गॉन वर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू कॉल इट एज कि भाई यू नो अपन 60 तक काम करेंगे। अबे 60 तक पहुंचोगे? जिस हिसाब से पॉल्यूशन हो रहा है, जिस हिसाब से कोविड आ रहा है, तुम्हें लग रहा है तुम 60 तक पहुंचोगे? चलो अगर पहुंच भी गए, 50 के बाद तुम्हारी बॉडी अलाउ नहीं करेगी काम करने के लिए। अपने ईटिंग हैबिट्स, अपने स्लीपिंग हैबिट्स आर सो वर्स टुडे, एंड वी कांट चेंज इट। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स यू ओनली, मी एज वेल। आवर ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स आर सो वर्स टुडे, वी आर नॉट एक्चुअली। अगर मैं तुम्हें एक टेक्निकल पॉइंट बताऊं, एज पर द इंडियन सर्वे, द लॉन्गिटिविटी ऑफ योर लाइफ इज नाउ 80 years. आप 80 साल तक जी जाओगे, क्योंकि मेडिकल इज ऑल्सो नाउ डेवलपिंग, R&D हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बट द प्रॉब्लम इज दैट आफ्टर 45 एंड 50 योर बॉडी विल अलाउ, विल नॉट अलाउ, विल नॉट अलाउ। अब आप 50 पे रिटायरमेंट ले रहे हो, ठीक है, और 80 पे आपकी डेथ हो रही है, ये 30 years कैसे निकालोगे? क्या चाहिए? पैसा। क्योंकि रिटायरमेंट पे पेंशन लगती है ना, पैसा चाहिए। आपके एक्सपेंसेस उतने ही रहेंगे, एम आई करेक्ट? वो पैसा अपने को क्या करना है, 25 से लेके 50 तक अपने को इतना पैसा कमाना है कि 50 से लेके 30 तक अपन आराम से सुकून से जिंदगी रहने। इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी टू योर चिल्ड्रन, मेक देम एलिजिबल टू अर्न दैट मच ऑफ मनी। दैट इज बेटर गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन।
इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द मनी, जैसे अपन लोग ना अपने अपने बच्चों को सिक्योर करेंगे, प्रॉपर्टीज खरीद के उनके नाम पे 5 करोड़ इसके नाम, 10 करोड़ इसके नाम, ऐसा नहीं करना. मेक दम कैपेबल इनफ टू अर्न दैट मनी. हाँ, ऑब्वियसली विल कीप देम असाइड, but you have spent 25 years like a horse. Don't you think that if I will be earning 50 60 cr by the age of 50, don't you think that I would like to spend on myself? अपने ऊपर ही पैसा खर्च नहीं किया तो क्या कमाया भाई? What's the point of earning the money when you can't spend it on yourself? ये मैंने अभी 4-5 years पहले जब 2016 हुआ था, 2016 में रियलाइज कर लिया था बॉस, आपको एज ऑफ रिटायरमेंट 45 to 50 रखना है. 45 मैक्स. 45 तक अपना 20 साल तक अच्छा कमाओ और 45 के बाद मस्त ऐश करो. अपने आप को हर साल एक टूर गिफ्ट करो, यूरोप टूर, वर्ल्ड टूर, क्रूज शिप, ये वो. गोवा में विला ले लो, सी फेसिंग. एक मनाली में जाके ले लो, श्रीनगर में. बस 2 जगह. कहीं जब पहाड़ देखने उधर चले जाओ और जब सी देखना है इधर चले जाओ. और जब किसी को नहीं देखना है, नहीं, जब किसी को नहीं देखना है तो कोर्स कर लो, कोई कोर्स कर लो, बट कीप योर बॉडी मूविंग, कीप योर स्किल मूविंग. अपने आप को रस्ट मत होने दो. आफ्टर बिकमिंग अ सीए, आई एम टेलिंग यू, 80% ऑफ यू विल डू जॉब, बट वंस यू एंटर इनटू द जॉब, व्हाट इज द बिगेस्ट इशू? यू विल फॉरगेट एवरीथिंग व्हाट यू लर्नड, क्योंकि यू विल बी इन द रेस ऑफ अर्निंग मनी. या तो आप प्रैक्टिस में आ जाओ, इफ यू वांट टू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्नड. आर यू गेटिंग द पॉइंट? या आप टीचिंग प्रोफेशन में आ जाओ, सो दैट यू कैन डिलीवर, बिकॉज फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू रीड फर्स्ट. क्योंकि क्या होता है, इफ यू विल गो इन एम्प्लॉयमेंट ना, योर बॉस विल पे यू ओनली अप टू दैट लेवल टिल द टाइम यू आर सेटिस्फाइंग हिज नीड्स. बट वंस यू विल नॉट सेटिस्फाई हिज नीड्स, ही विल थ्रो यू आउट. यू आर जस्ट अ प्रोडक्ट, यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय फॉर हिम. लेकिन प्रैक्टिस में यू नीड टू अपग्रेड एवरीथिंग. अब मैं तुम्हें अपना केस बताता हूं. I did company law 1956. Which act I did? क्योंकि 2013 में I got qualified. Companies Act 2013 came in 2014. 1st April 2014 को आया. तो it means I did what? 1950. But immediately after 1 year of my qualification, what happened? So it means I have to flush out which one? 9 years. And I have to learn what? 2000. Same incident happened with me in 2017 when GST came. GST is a replacement of what? वैट, सर्विस एंड एक्साइज. एम आई करेक्ट और नॉट? इन तीनों का जीएसटी आ गया. आई लर्न व्हाट? दोस 3. बट 2017 में क्या हो गया? जीएसटी आ गया. तो प्लीज टेल मी, इफ आई विल नॉट लर्न द न्यू थिंग्स इन माई लाइफ, विल आई बी एबल टू सर्वाइव? नो. अभी आपका May 24 का न्यू एग्जामिनेशन है, तो हाउ विल आई कॉल माई सेल्फ एज अ फैकल्टी इफ आई एम नॉट अपडेटेड? आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमेशा याद रख लो, डोंट अलाउ योर ब्रेन टू गेट रस्टेड. Keep on learning new things. Keep on skilling up yourself. समझ में आ रहा है? क्योंकि today's world is not qualification based. Today's world is what? Skill based. आज के टाइम पे पानी पूरी वाला तुम्हारे मंथली पैकेज से ज्यादा कमाता है. एक नॉर्मल अच्छा सा स्पॉट पानी पूरी का ठेला, ठीक है, 500 to 600 cups a day, 30 rupees per cup, in which 10 puchka he is selling you. पानीपुरी पुचका जो भी है, तो 30 रुपीज इंटू 500 कितना हुआ? 15,000. उसकी कॉस्ट निकाल लो 5,000, बचा कितना? 10,000. 25 दिन भी उन्होंने संडे को मस्त ऐश कर रहा है, 25 डेज भी वर्किंग कर रहा है, तो उन्होंने 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है. और तुम्हारा पैकेज कितना है? 13 lakhs पर एनम. तुम्हारा 1 लाख रुपए है. शर्म करो. तो वो तो सीए नहीं है ना. He is not a CA, but he is skillful. समझ में आ रहा है? He is not a CA, but he is what? उसको पता कि कस्टमर का टेस्ट क्या है. लड़कियां दिखी तो ज्यादा मसाला, क्योंकि लड़कियों का स्पाइसी होना, ये पुचका में, पानीपुरी में. लड़के देखे तो दही ज्यादा, ये वो सब नखरे. He knows that how to bring the customer. He will listen to you, your nakras and everything, and he will be able to sell 500 to 600 plates in a day. समझ रहे हो? तो आज के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है? स्किल इंपॉर्टेंट है. क्वालिफिकेशन है इंपॉर्टेंट ओनली टू पुश योरसेल्फ, बट उसके आगे अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, करोड्स में कमाना है, लैक्स में पर मंथ में, पर डे के हिसाब से कमाना है, तो बॉस आपको अपस्किल करना पड़ेगा. अब मेरे को ये बताओ, सो फार एनीबडी हैज डन दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद यू?
this is what is required in this course. You should know that कि you are highly important if you are in this course. क्योंकि this course is not going to make you earn. This is going to make you rich. Are you getting the point? You took a birth in a normal middle class family, that is not your fault. But if you die poor, that is your fault. Do you agree with that? बस वही करना अपने को. भगवान ने भेजा है, सीए कोर्स में एंटर हो गए, अब इसमें बाहर निकल कर पैसा ही पैसा कमाना है. क्या कमाना है? भाई साहब मैं तुम्हें बोलता हूं, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे ना, यू आर द बिगेस्ट डम्बेस्ट फेलो. पैसा कमाने के लिए सीए करनी है, बस ये याद रख लो. कोई पूछेगा डोंट यू वांट टू बी एथिकल, तू घर जा रहे भाई. एथिकल डोंट टीच योर फादर हाउ टू बी अ फादर. हम लोग सीए कोर्स में आए क्यों? पैसा कमाने के लिए. मेरे घर वालों ने 1-1 लाख रुपए का कोचिंग लिया, ठीक है ना. मेरे घर वालों ने मेरे को यहाँ पे हॉस्टल पे भेजा, 3 लाख रुपए पर एनम वो मेरे ऊपर स्पेंड कर रहे हैं टू बिकम एथिकल. घंटा. एथिकल, एथिकल क्या होता है? देखो एथिकल होता है व्हेन यू आर ट्रू टू योर प्रोफेशन. दैट व्हाट आई एम. कोई क्लाइंट मेरे को बोलेगा मेरे को ऑडिट करना है, वो मैं 100% एफिशिएंसी से करूंगा. लेकिन पैसा कमाना इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एथिक्स एंड अनएथिकल ना. अब मुकेश अंबानी अनएथिकल है, वो 1 घंटे में 90 lakhs कमाता है, वो अनएथिकल है? बताओ. 1 घंटे में 90 lakhs कमाता हूं ना, मैं तुम्हें उसकी फिगर्स दिखाऊं तुम पागल हो जाओगे. और वो बंदा भी सीए नहीं है, लेकिन ही नीड्स सीए सिग्नेचर. अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम लोग क्या नहीं करेंगे, साइन, तो आरओसी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो इसका मतलब झक मार के मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, केटीआर, ये जितने भी लोग हैं, दे ऑल नीड व्हाट? सीएस. दैट्स व्हाट यू आर. अब समझ में आ रहा है? इसका मतलब सबकी कन्नी अपने हाथ में. अपन जितना पैसा बोलेंगे दे हैव टू पे. सिंपल. क्लियर है? अगर नहीं पे करना तो दूसरे सीए के पास जाओ, उसके साथ अपना ब्रदरहुड है. ओए, ये अपनी पूरी बातचीत होती है हर एक सीए के साथ. भाई मेरा क्लाइंट है, तेरे पास आया तो उसको डबल बोल, so that he can come back to me. And if I'll able to get that client, 10% तेरा. Are you getting the point? सर ये पूरा ब्रदरहुड सिस्टरहुड होता है. आप सब एक दूसरे के भाई बहन हो. आप एक दूसरे के भाई बहन हो, समझ रहे हो? मैं क्यों भाई बहन का रिश्ता बनवा रहा हूं, समझो. आपको सीए बनना है, समझ रहे हो? तो डिड यू गेट सम थिंग्स इन योर हेड, इनसाइट्स ऑफ दिस कोर्स? तो आपको बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा. तो बहुत पैसा कमाना है तो उसके लिए सब्जेक्ट करना पड़ेगा. द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स. चलो इंट्रोडक्शन समझ में आया? सब्जेक्ट का थोड़ा था, ये तो पर्सनल इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना. अभी अपन सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे. बट नाउ प्लीज टेल मी ओवरऑल कंक्लूजन. डिड यू अंडरस्टैंड नाउ हु इज अ सीए, हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? आप ये क्वेश्चन अपने फ्रेंड को जाके पूछना, वो ब्लैंक हो जाएंगे. हैं तू पागल हो गई है क्या? सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट सेम होता है? तो मतलब नहीं, सेम नहीं होता. आज हमारा ऑडिटिंग का सेशन शुरू हुआ है, अब हमें पता है कि हु इज अ सीए एंड हु इज अ व्हाट? चार्टर्ड अकाउंटेंट. शैल वी स्टार्ट? Okay, now first of all, there might be a myth inside. How many of you are writing May 24 because you were not comfortable with the previous old syllabus? Anybody who converted from old to new or who failed in old and came into new? Raise your hand, no problem, no issues. You, old syllabus, give an exam or you didn't write? So you just wanted to convert into the new one. First of all, one very big myth which the students are having, except our subjects, all the remaining subjects have changed. Auditing में कोई change नहीं है. It is a clear-cut indication I'm giving you right now. Auditing में there is no change. Only the subject name has been changed. Subject name था auditing and assurance. Now the name is what? Auditing and. So sir, why they ICAI has pumped up this thing and like that? ICAI just shuffled the chapters. मतलब ये वाले चैप्टर का कंटेंट दे टुक इट फ्रॉम देयर एंड एडेड इट इनटू अनदर चैप्टर. दे जस्ट रीनेम्ड द चैप्टर्स. नो कंटेंट, लिटरली नो कंटेंट हैज बीन चेंज्ड. रादर योर पोर्शन हैज बीन व्हाट? रिड्यूस्ड. योर पोर्शन हैज बीन रिड्यूस्ड.
Now the reduced portion is what? The same chapter which I was telling you, company audit. Now company audit and auditors used to be there in both law and auditing, but as it is getting duplicated, so that's why they removed it from where? Auditing, and they kept it in what? Law. But maybe I will have a word with them, so accordingly we'll see who is going to teach you, or else I will provide you the notes for that. So let us understand the chapters first. What are the chapters we are having? The very first chapter which we are having is known as what? Nature, objective and scope of audit. अच्छा, ये चैप्टर में अपन पता क्या करेंगे? In this chapter we are only going to understand one word, that is called, the meaning of the word called what? Audit. Only one word we are going to learn. What do you mean by audit? अच्छा, मेरे को ये बताओ, anybody in the class knows what do you mean by audit? क्या होता है audit? अच्छा, what is the first word comes to your mind when you think about the word called audit? Auditing, whenever the word comes to your mind, हमारे दिमाग में आता है investigation. Auditing means what? Investigation. No. Auditing is not investigation. Auditing is examination. Auditing is what? Examine. I'll tell you the difference between the two. ध्यान से सुनना. मेरे को ये बताओ, what is the difference between the word examination and investigation, if you have that in your mind? Right now these both words are looking same to you. अब मेरे को ये बताओ, investigation पता कब होती है? Investigation starts with a suspicious mind. It starts with which mind? When you know that some scam and scandal has happened in the company, then you start auditing or you start investigation. Investigate. क्योंकि you already know that कि fraud has happened. So you start your thing with a which mind? Suspicious. शक के दिमाग से start करते हो. But मेरे को ये बताओ, auditing कब होता है? Auditing happens during the year or after the end of the financial year? अच्छा बताओ, which financial year is going on right now? 23, 24. I hope the meaning of financial year you know, because tax में सर ने बताया होगा. तो financial year 23, 24. 23, 24 financial year will get over when? 31st March 2024. Auditing starts when accounting ends. Repeat. Accounting कब end होगी ये साल की? 31st. उसके बाद क्या start होगा? Auditing. So auditing starts when what ends? Accounting ends. It means chartered accountants will start going to their client's place and check their books of accounts and financial statements when? During the year or after the end of the financial year? Was I there with my client throughout the year? I am only entering when? After the end of the financial. So how I will know that ki fraud has happened? Do I know that fraud has happened or I don't know? So when we start doing something examination, that is called what? Auditing. So auditing does not start with a which mind? Suspicious mind. अगर मेरे को पता होता कि my client has done a fraud, then I will start doing auditing or investigation. But do you know that what your client has done in 365 days? No. You are entering in the month of May, June, July. So you will enter, you will examine. After examination, you will come across some frauds and errors have happened. Then you will think from non-suspicious mind to suspicious mind. So auditing never starts with which mind? Suspicious. So that's why auditing is not an investigation. Auditing is an examination. समझ में आया? चलो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं. Let's say for example, there are two friends A and B. So A and B came from Vijayawada to Hyderabad to take the classes, right? A and B both first time they left their city and came to the another city to take the classes. A's mother is very worried कि my bacha has first time gone to the another city for taking the classes, whether he might be taking the food properly or not. So mother every day 9:30 in the night, once the classes are over, she used to call Mr. A कि बेटा how are you, how was your breakfast, lunch, dinner, classes अच्छा गया ना? Daily routine it was. Now after 1 month of the classes, Mr. A came to Hyderabad now. Now you know that कि air will change, environment will change. उसने आके girlfriend बना ली. क्या बना ली? Girlfriend. तो 1 month में Mr. A got the girlfriend, and now mother is calling at 9:30. His phone is busy. क्योंकि वो slot उसने किसको दे दिया? Girlfriend को. 9:45 busy, 10 o'clock busy, 10:30 busy, 10:45 finally picked up. Mother said, Chinna, what happened?
तो वो मेरे को क्या बोला कि नो 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 अम्मा, टुडे ऑडिटिंग सब्जेक्ट हैज स्टार्टेड, तो सर हैज गिवन अस अ वेरी इंट्रोडक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आई वाज डिस्कसिंग द डाउट्स विद माय फ्रेंड फॉर द लास्ट 1 आवर. बताओ, इज ही टेलिंग अ लाई और नॉट? एम आई करेक्ट? तो मदर सेड पक्का ना? कहता हाँ पक्का, व्हाट एवरी डे यू कॉल ना करके he hanged up the phone. Now, like that, mother called for 6-7 days, and every day, exactly 9:30 to 10:30, phone was looking busy. One day, mother made the complaint to the father. A father called, phone busy, 9:30 busy, 9:45 busy, 10 busy, 10:30 busy, and father call he picked up by 10:45. अब you know ना father का ए ऐसा टोन रहता ना पापा का. तो उन्होंने बोला पापा, पहले तो मतलब उसका सूसू पैंट में ही निकल गया. पापा कैसे कॉल कर दिए, मम्मा की आवाज में पापा कैसे आ गए? तो पापा ए क्या कर रहा तू, एक पिछले 1 घंटे से आई एम कॉलिंग यू, योर नंबर इज लुकिंग बिजी एंड ऑल दोस थिंग्स. कहता पापा मम्मा को आई टोल्ड ना ऑडिटिंग स्टार्टेड, तो एवरी डे ऑडिटिंग इज अ वेरी हैवी सब्जेक्ट, सो आई वाज आस्किंग द डाउट टू द फ्रेंड. अच्छा, फ्रेंड का नंबर दे. तो पापा ने बी का नंबर लिया. अब पापा के पास 2 फोन, एंड पापा इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. पापा के पास 2 फोन, उन्होंने दूसरे बी को कॉल लगाया, और बी एंड ए आर चड्डी बड्डी फ्रेंड्स. दे विच फ्रेंड्स? दे नो हाउ टू सेव ईच अदर. तो हे papa called B, and whatever the papa was asking A, B was confirming, A, B was confirming. Papa suddenly asked, "Acha, tell me what is SA 230?" तो he said that, कौन बोला? SA 230 is actually a audit documentation. What is the standard name? Audit documentation. उन्होंने बोलते हैं sampling. Their papa caught it. तो almost this conversation went for 2 hours. How many hours? अब overall conclusion of the story. What mother did, what father did? Mother did examination or investigation? Father did what? यही डिफरेंस है बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन. तो मदर वॉज डूइंग ऑडिटिंग एंड फादर वॉज डूइंग व्हाट? इन्वेस्टिगेशन. तुम्हें क्या लगा नीचे? अच्छा, यू वर एक्सपेक्टिंग फॉर अ गुड एंडिंग. हाँ, वो गर्लफ्रेंड के बारे में बोला ना. अरे मैड फेलो, सब्जेक्ट में आ जाओ. हर जगह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एंडिंग नहीं होती. नहीं देखी क्या अर्जुन रेड्डी? फिर ऐसे ही होता है वो रियल लाइफ में भी. चलो, डिड यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल? तो व्हाट स्टार्ट्स विद अ सस्पिशियस माइंड is called as investigation. What does not start is known as what? Audit. That is what we are going to learn in the chapter number 1, where we'll understand nature of audit, means types of audit, objectives, इसका purpose क्या है, and scope, boundaries क्या है. कि when we go to the client's place to do the audit, what we can do, what we can't do. That means our Lakshman Rekha. That is called scope. Did you get the point? So what is the name of the subject? Nature, scope, objective of audit. What is the next chapter? ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम. अब सुनना ध्यान से. सर, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी क्या होती है, मेरे को ये बताओ. जनरली इन द नॉर्मल लाइफ वी यूज दीज टू वर्ड्स वेरी सिमिलर. अरे तेरा प्लान क्या है? अरे व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी? लाइक दैट वी यूज इट वेरी इंटरचेंजेबली. प्लानिंग मीन्स यू एक्वायर द नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस. अब मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द एक्चुअल बिजनेस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? यू नो अम्मा? You know the business of Reliance Industries? You know the business of Reliance Industries? You know actual? Acha, they don't know. What does that mean? It means when you get appointed as an auditor, do you have to first acquire the knowledge of client's business or not? Yes. उसे बोलते हैं planning. What do we call it as? तो audit में भी planning होती है. अच्छा, once I will come to know about Reliance. Reliance is a चिन्ना company or पेद्दा company? Do I need a small team or big team? उसे बोलते हैं strategy. That is called what? Strategy. So what do we do first? Planning, and then we make what? अब मेरे को ये बताओ, you go to a DMart. DMart supermarket है ना. Suppose if I need 3 things, 1 kg चीनी, 5 kg आटा, 5 kg rice. Can you remember these 3 things? Yes. You can go to the DMart. Do you have to write it on a slip, or you can keep it in mind? Now I want monthly groceries. 121 items are there. Can you keep that in mind? What do you make? तो ऑडिट में भी ऐसे ही होता है. When we go to the client's place, do we have to check 1 or 2 things or thousands of things? Can you keep that in mind? It means you can't keep your planning,
You can't keep your strategy in your mind. So when we put our planning and strategy on a piece of paper, it turns into a what? Program. So program is the written version of what? Strategy and planning. मेरे को वहां पे जाके क्या कर, अच्छा मेरे को ये बताओ, ऑडिट के स्पेलिंग बताओ, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। अब मेरे को ये बताओ, विल आई मेक अ चेकलिस्ट ऑफ ऑडिट ऑल्सो? मेरे को वहां पे जाके ये भी चेक करना है, व्हाट इज टीडीएस? डू आई हैव टू चेक जीएसटी ऑल्सो? मेरे को उनका सेल्स चेक करना है, परचेज चेक करना है, डेटर्स चेक करना है, क्रेडिटर्स चेक करना है, इनकम, एक्सपेंडिचर्स, लोन्स, फिक्स्ड एसेट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स यू हैव टू चेक और नॉट। कैन यू कीप दैट इन माइंड? तो मैंने भी क्या किया, पेपर बना लिया। अब मैं क्या बताऊं, व्हेन यू गो टू डीमार्ट, डू यू पिक अप द आइटम एंड पुट अ टिक मार्क और नॉट, so that you will not repeat that item again? So 121 items you wrote on a list. As and when you went to the shelves, you took the item and put a what? Tick mark. All you do is tick only, na? All you do is tick only, na? All you do is tick only. Audit का full form क्या है? full form और वही चीज हम लोग रियल लाइफ में करते हैं। करेक्ट है नहीं है? समझ में आया? तो हम लोग भी क्या, जब मैंने टीडीएस चेक कर लिया, व्हेन आई विल चेक द टीडीएस, व्हाट विल आई डू? टिक मार्क। आई विल नॉट रिपीट अगेन। आई चेक जीएसटी, टिक मार्क। तो ऑल यू डू इज टिक ओनली। समझ रहे हो? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन सेकंड चैप्टर। व्हाट इज द सेकंड चैप्टर? ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम। तो विच वन इज अ रिटन वर्जन ऑफ टू? Program is a written version of my planning and, क्योंकि we are humans, we are not God, we cannot keep all the things in our mind, so we need something in what? Writing. समझ में आया? Okay, moving to the next chapter. What is the name? Risk assessment and internal control. First of all, I am putting you into the subject so that you will learn कि when we'll enter into this chapter what we are going to do. अच्छा बताओ, risk assessment and what? Internal control. अच्छा, if anyone does any fight in this class, whether management will come to know? What if I'll not tell कि you two guys were fighting? How management will come to know? इसे बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। What do we call it as? इंटरनल। हर एक कंपनी का अपना अपना इंटरनल कंट्रोल होता है। अच्छा मेरे को ये बताओ, डू वी सी द सिक्योरिटी गार्ड एट द बैंक और नॉट? विद गन और विदाउट गन? विद बुलेट्स और विदाउट बुलेट? वो बैंक का इंटरनल कंट्रोल है। अच्छा, ये जो अपना यूपीआई होता है, डू वी मेक द पेमेंट और यूपीआई? फर्स्ट वी एंटर द ऐप, वी पुट वन पासवर्ड, देन वी मेक द पेमेंट, वी पुट वन पासवर्ड और नॉट? वो हमारा इंटरनल कंट्रोल है। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल मीन्स सिस्टम्स विच वी इंस्टॉल टू प्रोटेक्ट अवर एसेट्स, टू प्रोटेक्ट अवर व्हाट? एसेट्स। अब मेरे को ये बताओ, व्हाई द बैंक्स विल हैव 40 कैमरास इंस्टॉल्ड? क्योंकि बैंक में किस चीज का डीलिंग होता है? मनी का। इज इट द पब्लिक मनी और नॉट? डू दे वांट टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड्स एंड एरर्स? तो उसके लिए व्हाट डू वी नीड? इंटरनल कंट्रोल। इज इट क्लियर नाउ? तो दैट विल अंडरस्टैंड। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? चलो, अब मेरे पास बाइक है, मान लो, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास हार्ले डेविडसन है, 2000 सीसी मॉडल और आउटर रिंग रोड। आहा, 2000 सीसी की बाइक और आउटर रिंग रोड। डू यू थिंक दैट आई विल बी राइडिंग द बाइक एट 40 किलोमीटर पर आवर और 200 किलोमीटर पर आवर? इमेजिन विदाउट हेलमेट। और अगर मतलब मैं नहीं, ए है, मैं क्यों अपने आप को एक्सीडेंट करवाऊं? तो ए इज राइडिंग द हार्ले डेविडसन 2000 सीसी 200 किलोमीटर पर आवर एट आउटर रिंग रोड एंड ही मेट विद एन एक्सीडेंट। व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिज डेथ? हाई और लो? But unfortunately, he did not meet with an accident. He came back home safely, but his friend made a complaint to his mother कि your son was riding the bike at 200 kilometers per hour. तो mother बोली, tomorrow if you want to take the bike out, wear the helmet. Wear what? Without helmet, don't ride the bike. Now next day, he took his words of the mother very seriously. He bought a very comfortable ISI marked helmet. And now he is riding the same bike at 200 kilometers per hour on the same outer ring road. Chances of his death are what? Higher or lower? Eliminated or reduced? Reduced. आप समझ में आ रहा है? इसका मतलब वो हेलमेट ने क्या किया? हेलमेट reduced the risk
of death on his life. Am I correct? Are you getting the point? If he will not wear the helmet, will he meet with the hell? Helmet. Meet with the hell. Helmet वहीं से आया है. क्योंकि if you will not wear the helmet, you will meet with the hell. Are you getting the point? अब मेरे को ये बताओ, helmet eliminated the chances of his death or reduced the chances of his death? वही चीज इंटरनल कंट्रोल करता है. अगर मैं यहां पे कैमरा लगा दूंगा, two students at the back are fighting with each other, whether a camera will come down, hey, why are you fighting? Or camera will only catch. Camera detects, does not prevent. Camera what? Detects, but does not prevent. वैसे ही helmet does not eliminate the risk, it only what? Reduces the risk. तो वही चैप्टर का नाम है. What is the चैप्टर का नाम? Assessment to check your what? It means auditor will check the internal controls of the client to understand कि how much risk has been reduced. अब समझ में आया? अर्धमाइंदा? समझ? वैसे मेरे को तेलुगु नहीं आती, मेरे को दो चार वर्ड आते हैं. ओकटी रेंडू मूडू करके 3 वर्ड्स एंड पायना क्योंकि लिफ्ट में आना होता है, पायना इन किंदा एंड अर्धमाइंदा. व्हेन आई से दैट डिड यू अंडरस्टैंड, बस 3-4 वर्ड आते हैं, बट आई कैन अंडरस्टैंड. So you can't play with me. You might be thinking सर को तेलुगु में गाली निकाल के चले जाते हैं. I can understand, ठीक है, but I don't know because I am Punjabi, I am from Punjab, so that's the reason. It's been 12 years that I am in here, but unfortunately I am unable to understand Telugu. I understand I can, but unable to speak the Telugu. चलो, what is the next chapter? Auditor. अच्छे बताओ, इसके नाम से ही क्या लगता है? Proof. अब मेरे को रिलायंस के अंदर 20 करोड़ का फ्रॉड दिखा. व्हाट डिड आई सी? फ्रॉड. अब मैंने मुकेश अंबानी का डोर नॉक किया, मैंने कहा सर मे आई कम इन? ही सेड यस. मैंने कहा सर देयर इज अ फ्रॉड ऑफ 20 करोड़. व्हाट ही विल से? डू यू हैव प्रूफ फॉर दैट? तो इट मींस आई हैव टू कलेक्ट व्हाट? एविडेंस. आई हैव टू कलेक्ट व्हाट? एविडेंस. तो इट मींस, डिड यू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द चैप्टर? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? ऑडिट. इसका मतलब अपने को क्या कलेक्ट करने हैं? प्रूफ्स टू शो नेगेटिव थिंग्स टू माय क्लाइंट. करेक्ट? Next point, please. Okay. 5th chapter is, what is the name of the chapter? अच्छा मेरे को ये बताओ, बैलेंस शीट पीएनएल क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बैलेंस शीट एंड पीएनएल क्या होता है? सेल परचेज क्या होता है? आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एम आई करेक्ट? तो यहां पे हम किस चीज को ऑडिट कर रहे हैं? Audit of financial statement or audit of items of financial statement? So it means when you are being hired for a particular items, like आपको sales का audit करना है, purchase का audit करना है, fixed assets का audit करना है, liabilities का audit करना है, debtors का audit करना है, creditor का करना है, rent income का audit करना है, sales on consignment basis का audit करना है. तो am I doing audit of full FS or only some items? So what is the name of the chapter? Audit of items of financial statement. और ये ऐसा होता है सर, जरूरी नहीं है कि आपको कंपनीज आपको फुल ऑडिट के लिए हायर करें. कंपनीज में हायर ऑल्सो यू फॉरवर्ड. हो सकता है उनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज डिफरेंट एंड यू आर देयर आइटम बेस्ड ऑडिटर. विच ऑडिटर? आइटम. अब तुम सोचो, रिलायंस का टर्नओवर दिखाता हूं मैं. चलो यहां से तुम्हें जर्नी स्टार्ट करते हैं रियल फिगर्स की. ये रिलायंस के छोटे से फिगर्स हैं, छोटे हैं. अच्छा आगे करोड़ लिखा हुआ है, डोंट फॉरगेट. रेवेन्यू पढ़ो कितना? ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़. 10 लाख करोड़. तो 70 और है आगे, समझ रहे हो? तो इसका अलग से ऑडिट हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है. सेल्स का ऑडिट हो सकता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का ऑडिट हो सकता है, एक्सपोर्ट्स का ऑडिट हो सकता है, स्टॉक का ऑडिट हो सकता है. So that's why the name of the chapter was what? What was the name of our chapter? Audit of what? Items of financial. Are you getting the understanding of every chapter? I'm just giving the brief. Because we are going to start tomorrow with the new chapter. What is the next one? अच्छा ये बताओ, when we do the audit, do we collect 1 or 2 evidences? Or so many? Thousands of papers you will collect from whose place? Client's place. So many evidences. तो शुड आई कीप द एविडेंसेस इन माई हैंड एंड इन माई पॉकेट? पीछे कार्गो पहन के जाऊं 20-25 पॉकेट वाला? और शुड आई पुट द एविडेंसेस इन अ फाइल? तो
collecting the evidences and assembling in a proper file is known as audit documentation. So audit documentation includes what? Audit evidences. Repeat after me. Audit documentation includes what? Audit. आपका A to Z audit, whatever the papers you have collected, planning, strategy, letters, sales invoice, purchase, everything what you have collected, you have to put it in a file, and that file is known as what? Audit document. Are you understanding? What is the next one? Completion and review. अब ये क्या होता है, ये ना छोटे छोटे एरियाज है विच वी नीड टू टच. जैसे कंपनी का ऑडिट हो रहा है तो आपने एक वर्ड सुना होगा, गोइंग कंसर्न. क्या होता है गोइंग कंसर्न? डू वी मेक अ कंपनी टू शट इट डाउन इन द नियर फ्यूचर और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? तो ऑडिटर को ये सारी चीजें भी चेक करनी होती है कि कंपनी का गोइंग कंसर्न स्ट्रांग है या नहीं. क्योंकि इफ द गोइंग कंसर्न इज नॉट स्ट्रांग, व्हाट डज दैट मीन? कि कंपनी इज सॉल्वेंट और स्लोली स्लोली बिकमिंग इंसॉल्वेंट. डू आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर टू टेल देम कि कंपनी इज बिकमिंग इंसॉल्वेंट और नॉट? For that, we need to check and review some things. But that we do only near end of the audit. That's why what is the name of the chapter? Completion and review. Are you getting now? ये देखो 570 लिख के आया ना, going concern 450. Those small topics are there. What is the next one? What is the end product of every audit? हम लोग उनको क्या देंगे? Report. Audit report के अंदर क्या होगा? My opinion. What will be inside the report? My opinion. Opinion can be of two types: positive, negative. If I found everything superb, flawless, everything is good, positive opinion. But if I'll find some frauds and errors, I'll give a which opinion? So what is included in what? Report in opinion or opinion in report? The name of the chapter is what? इसमें हम लोग 700 सीरीज करेंगे. क्या करेंगे? 700 सीरीज. Okay, what is the next one? अच्छा मेरे को ये बताओ, कंपनी का ऑडिट तो हम लोग पढ़ लेंगे, सिनेमा हॉल का ऑडिट आ गया तो? सिनेमा हॉल का भी ऑडिट होते हैं, हॉस्पिटल का ऑडिट होता है, हाँ, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप. तो व्हाट आर दीज? दीज आर कंपनीज और नॉन कंपनीज? आर दे सिमिलर लाइक कंपनी और डिफरेंट फ्रॉम कंपनी? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? रीड. स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी. अगर आपको होटल का ऑडिट आ गया तो कैसे करना है, सिनेमा हॉल का ऑडिट आया तो कैसे. अच्छा मेरे को चलो इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. सिनेमा हॉल का ऑडिट आया तो कैसे करोगे? सो पहले तो मूवी देखेंगे, तो उसकी पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी को चेक करेंगे. नहीं 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 नहीं, आपको कोई टिकट्स फ्री में नहीं मिलेंगी. सिनेमा हॉल का ऑडिट क्या करेंगे? अच्छा मेरे को बताओ, हर एक कंपनी में नॉर्मल होता क्या है? व्हाट इज जनरली देयर इन एवरी कंपनी? सेल्स, परचेस, इनकम्स, expenditures, assets, liability. These are the 6 things which every organization has. Ab let's imagine we are checking 4 areas: incomes, expenditures, assets and liability. I will ask you a very simple question. Give me the simple answer. What is the major income of a cinema hall? Ticket selling. Ticket selling. Second major, food. वो पागल बनाते 400 रुपए का पॉपकॉर्न, 300 रुपए का कोल्ड ड्रिंक. तो फूड. सेकंड क्या था? रेस्टोरेंट इनकम. वी कैन कॉल इट एज विच इनकम? डू वी हैव इन बिटवीन एडवर्टाइजमेंट स्लाइड्स ट्रेलर्स आते हैं? वो अपना ललिता ज्वेलर, गुंडू फेलो, बाय द व्हाट इज डायमंड फ्रॉम मी दिस एंड, फिर वो अपनी समंथा, साउथ इंडिया मॉल, ये वो सब आते ना. वो अपना सिगरेट वाला महेश, करेक्ट है. ये कौन सी इनकम हुई? एडवर्टाइजमेंट. फिर सिनेमा हॉल में पार्किंग भी होती है, तो ये इसके इनकम्स हो गए. अच्छा, सिनेमा हॉल का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स. विच एक्सपेंडिचर? डू वी ओन अ मूवी और वी प्ले अ मूवी? वी गेट द राइट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर. किससे राइट्स मिलते हैं? प्रोड्यूसर. तो उसमें वट एवर द टिकट सेलिंग यू आर डूइंग, आउट ऑफ विच 50% ऑफ द पोर्शन गोज टू होम? Producer, and 50% will be retained by the cinema hall owner. Was the biggest expenditure is what? Distribution rights. फिर सिनेमा हॉल इलेक्ट्रिसिटी, सिनेमा हॉल में एसेट्स और डेप्रिसिएशन, सिनेमा हॉल में स्टाफ है तो सैलरीज एंड वेजेस. ऑडिट इज सेम, ओनली द एंटिटी इज गेटिंग डिफरेंट. चलो, अप्लाइंग द दिस फॉर्मूला, टेल मी हाउ यू विल डू द ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल. क्या हॉस्पिटल के इनकम क्या होते हैं?
पेशेंट इनकम, मेडिसिन इनकम, डायग्नोस्टिक इनकम, वो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, थ्री इनकम्स, टेल मी थ्री इनकम्स, पेशेंट इनकम, मेडिसिन इनकम, डायग्नोस्टिक, कैंटीन इज ऑल्सो देयर, तो कैंटीन इनकम। इसका हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर क्या होगा? डॉक्टर्स रेम्यूनरेशन, स्टाफ सैलरी, परचेज ऑफ मेडिसिन, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, power consumption, yes or no? Only the entity is changing, whereas the audit will remain same. So why should we only restrict ourselves to learn only the audit of company? We will also do the audit of different types of what? Entity. Correct है? What is the next one? ये तो नाम से पता चल गया, हाउ टू डू द विच ऑडिट? बैंक ऑडिट। ये अपन पढ़ेंगे। ये क्या है? एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ व्हाट? मैंने आपको बताया था ना, वो ऐसा अपन, ये रे वो वर्ड्स पढ़ो, ये वर्ड, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंडिपेंडेंस। ये हैवी हैवी वर्ड्स बड़ी हैवी वॉइस में बोलना पड़ता है। And you know, the fact is that ki your character is nothing but is shown by these qualities only. तुम एक सीरियस नोट पे आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कितने शेयर होल्डर हैं? 92,000 शेयर होल्डर्स हैं। कितने? Those 92,000 shareholders are waiting for your signature. Understand that. Those 92,000 shareholders are waiting for whose signature? Chartered accountant's signature. Reason? Sign to Mukesh Ambani can also do, but Mukesh Ambani is the owner of the company, na? Will he be partial? Will he be biased or not? Yeah. But do we need independent person to do the audit of Reliance or not? Who is that independent person? Chartered accountant. So whose signature he will believe more? Chartered accountant. Now, don't you think that would you like to take some bribe and put their expectations to the zero level? No. When you become a chartered accountant, na, and see, jokes apart when I was telling you this oath and all, but these are your character builders. These are the main qualities we should have in character. Because you can't expect that when you do the wrong thing and the other person is suffering a loss, it means you have to put yourself into that situation. What if that person could be your parents who has invested in Reliance? मेरे को ये बताओ, एक सिंगल, if I will give the negative opinion on Reliance, what that shareholder will do? He will start selling what? Share. But if I'll give the positive opinion, what shareholder will do? He will start buying what? Share. Is he taking the decision on whose signature? So we have a lot of responsibility towards public. हमेशा याद रखना. You have to be ethical in your character. So many instances. अब तुम्हें क्या लगता है? मुकेश अंबानी can't bribe you. Is he so rich person or not? He can bribe you. अगर वो आपके अकाउंट में immediately 20 करोड़ रुपीस डाल दे, तो you will sign his financial statement true and fair. आपने पॉजिटिव बोल दिया. But look at the impact. What about those 92,000 people, those bankers, lenders who have invested in what? Reliance. Are you giving them the wrong opinion or not? Yes. So this is why the name of the topic is known as what? Ethics and terms of audit engagement. कभी भी याद करो, आपको पैसा कमाने का, it's not that कि 10 crores, 20 crores is a very huge amount, but you can earn it by becoming more ethical rather than becoming what? Unethical. अपना पूरा जो मार्केट है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट का, पूरा मार्केट is only based on one thing. We are ethical persons. We are which persons? Ethical. I was telling you at that point of time, jokes apart, ki what is ethical. I'm not saying that we do not do unethical things. We also help our client in reducing their taxes. अच्छा मेरे को ये बताओ, she has 20 crores of income, total income in cash. Are you getting the point? She knows that if she will tell this to the income tax department, she will end up paying 30% tax. How much? 20 crores का 30% कितना हुआ? 6 crore. It means she'll be having only 14 crores. क्योंकि 6 crores will go in form of what? She came to my office and she is saying that, sir, I don't want to pay 6 crores. I want to pay less.
तो मैंने इसकी इन्वेस्टमेंट करवाई म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, एलआईसी दिलवाया, पीपीएफ में अकाउंट खुलवाया, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम. आई मेड श्योर दैट हर इनकम गॉट रिड्यूस टू 6 crore. 6 crore पे 30% लगाओ अभी, 1.8 crore. Am I correct? How much she was supposed to pay? 6 crore. But how much she is paying now? This is called tax planning. It is not called tax evasion. ये टैक्स की चोरी नहीं है, ये टैक्स की क्या है? प्लानिंग. Did I go beyond the law or within the law? She came to me, she paid me a fees, I gave her the suggestion, she invested in those areas, and she converted her 20 lakhs and reduced it to what? 6 crores. 20 crores reduced to what? 6 crores. She ended up paying only how much tax now? 1.8 CR instead of what? 6 CR. Did I help her in saving the tax or not? This is called tax saving, not tax evasion. अब बताओ, मैंने कुछ अनएथिकल किया या एथिकल किया? She wanted my services, I gave my services. सिंपल सी बात है. तो एथिक्स और अनएथिक्स में डिफरेंस को लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग? बट सपोज शी इज सेइंग दैट रोहित, कैन यू प्लीज हेल्प मी इन हाइडिंग दिस इनकम? कैन यू प्लीज हेल्प मी इन हाइडिंग और making tax evasion? Then I am doing what? Unethical thing. But helping her in saving the tax is not unethical. That's why we chartered accountants are being paid in lakhs and lakhs of money. कोई हमारे ऑफिस में क्यों आएगा? टैक्स पे करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, बचाने के लिए. इसीलिए तो हम लोग हेल्प करते. करेक्ट है. और इसका मतलब सीए बनने के बाद आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? अपने दिमाग की. जो आपने लर्न करोगे ना, वो आप क्लाइंट को एक्सप्रेस करोगे. और क्लाइंट डज नॉट नो दैट. दैट्स व्हाई ही इज इन योर ऑफिस एंड ही विल पे यू अ बिग चंक ऑफ फीस. दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. With all good respect to your ethics, अच्छा ये बताओ, ethics और morals क्या होते हैं? What do you mean by morals? When I entered, when I say good morning to you, you will stand up or you don't stand up, but do you have a little bit of respect for your faculties or not? That is called morals. That your parents have taught you कि when elder comes and when the teacher comes, you have to respect. We also know that कि when the younger comes, we have to respect. Otherwise, we will not be able to earn the respect. These are called morals. Having a good differentiation between right and wrong thing is known as what? Moral. If you see any old person trying to cross the road, will you help that person? That is your morals. Are you getting the point? If you are helping the person in tax ki chori, that is ethical or unethical? Unethical. But if you are helping them in planning their taxes, that is ethical. So there is a very thin line of difference. You need to understand what is ethical and what is unethical. We'll all understand in this chapter, and that will ultimately bring an end to your topic. तो टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 11. खत्म. आधा पोर्शन तो आज ही खत्म हो गया. तो कितने टोटल चैप्टर? 11. ये आपकी पूरी लिस्ट. अब मैं तुम्हें बताता हूं नवंबर 23 एंड मई 24 में डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस? कंपनी ऑडिट चैप्टर यू फाउंड एनीवेयर? It is eliminated. So that burden is totally on Prithvi sir, not on me. Point number 1. Point number 2, remaining chapters only got what? Shuffled. Are you getting the point? One more chapter has been eliminated. If you are able to see, there is no chapter called automated environment audit. What is the name? That chapter also has been eliminated. Right? This was a brief introduction of your subject. I hope you liked the normal introduction. Right? And do make sure that you don't stop after getting qualified. Keep on studying and keep on what? Learning. Updating yourself. That is the only solution. And I can guarantee you, after 10 years, if you will meet me now, you will thank me for that. Sir, आपने उस दिन ऐसा कुछ बताया था, which we literally applied on our life, and today where we are. You might be earning 10 times more than me. पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है. पैसा कमाना आना चाहिए. There's no saturation limit for earning the money. You just need to know the right way how to earn it. Are you getting the point? Keep yourself. अब मैं तुम्हें बताता हूँ 2020 तक I was not into the online classes. Now today, monthly, average नहीं तो 30 to 40 classes I'm selling. Into, into how? कितना? अब फिर बताओ. ये मेरा पैसिव इनकम है. 4 to 5 lakhs is my passive income. Are you getting it? Main income यहाँ पे. फिर practice में articles are doing the work.
that client is also paying me the money. So you have to generate different sources of income, right? So thank you so much for lending your patient ears. I'll borrow it again tomorrow. So tomorrow we'll be starting with our first chapter. What is the name? Nature, objective and scope. I'll be giving the notes also, right? One to printed notes definitely they will give you, and one handwritten notes also I'll give you. Almost 300 to 400 pages के होंगे, which you will be writing also sometimes. And if I'm not making right, I'll give you the PDFs for the same. But make sure that you should be well versed with this subject. This is your leg puller subject. Leg puller, not pusher. Pull. इसमें 40 क्रॉस करना is very difficult. Auditing में. Only you can understand the concept, the 40 will be yours, right? See you guys tomorrow. Thank you so much. Say thank you. I left you 15 minutes before. Right? Chalo. Take care. Bye everyone.